Assalamu alaikum students. This is your lecturer Saima Yaqub from PMDC Girls Hyderabad, and today we are going to talk about behavior therapies. So let's get started. Behavior therapy is a method of psychotherapy that uses learning principles to change behavior, right? There are different principles that are followed to bring changes in the behavior. The ultimate goal is to eliminate behavior patterns that are maladopted and self-defeating behavior. So, it has become increasingly popular among clinical psychologists and has produced numerous success in dealing with various kinds of psychosomatic illness, phobias, speech difficulties, sexual problems, and other forms of personality disturbances. So, since this behavior therapy is essentially concerned with relearning, it utilizes many techniques. So, following are the techniques which are involved in the behavior therapy. So, to start with, first one is systematic desensitization. This theory was developed by Wolf in 1958, and according to him, the first step in this therapy is to train the client to relax. And Wolf worked out a way to train the client to remain calm and relaxed in a situation that formerly produced anxiety. Wolf's approach is elegant in its simplicity, and the carrying out of his method is equally straightforward. So, this method is usually done in first 6 sessions, and in that it's like during this early session of therapy time, uh, it's also spent in constructing a hierarchy of the individual anxieties. So, anxiety hierarchy is a list of related stimuli remarked in descending order according to the amount of anxiety they evoke in the client. पहले उसकी anxiety को client की नीचे किया जाता है, ठीक है, उसको रिलैक्स किया जाता है, इसको desensitization कहते हैं, ठीक है, सेंसिटिविटी खत्म करना। और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे क्या करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, once the client has mastered the relaxation techniques and the therapist has established an appropriate anxiety hierarchy, पहुंच गया है वहां तक, उसके बाद फिर actual process start होता है which is desensitization, ठीक है। While the client relaxes completely in a comfortable chair with closed eyes, तो therapist जो है वो सीरीज ऑफ सीन्स जो है वो स्टार्ट करता है। स्टार्ट वो लेता है न्यूट्रल से और फिर आहिस्ता आहिस्ता मूविंग टू वन एट द बॉटम ऑफ द क्लाइंट्स एंजाइटी हायरार्की एंड द प्रोग्रेस ग्रेजुअली अप इट। जब वो रिलैक्स है पेशेंट तो फिर उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता वो इमेजेस और सीन्स उसके जहन में क्रिएट करना शुरू करता है, इमेजिन करवाना शुरू करता है, ठीक है। और जो ही जो है वो सिचुएशन डिस्क्राइब होना शुरू होती है और क्लाइंट रिपोर्ट करता है कि नाउ ही हैज स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी, तो वहां पर इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। The treatment it continues until the client is able to remain in a relaxed state while vividly imaging the scenes that formerly evoked the greatest anxiety. और ये ट्रीटमेंट तब तक जारी रहती है जब तक जो क्लाइंट है वो उसी एंजाइटी की सिचुएशन में दोबारा से काम रहना नहीं सीख जाता, ठीक है। सो डिसेंसिटाइजेशन सेशन जो है इट इज़ यूजुअली फ्रॉम 15 to 30 minutes and 2 to 3 times per week. And overall therapy program may of course take a number of weeks or even months. So it has been successful in dealing with a wide range of maladaptive behaviors. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इस स्लाइड में इम्प्लोसिव थेरेपी। दिस थेरेपी इट इन्वॉल्व्स द कंडीशनड अवॉइडेंस ऑफ एंजाइटी अराउजिंग स्टिमुलाई एंड क्लाइंट्स आर आस्क्ड टू इमेजिन रिलीफ एवर्सिव सीन्स एसोसिएटेड विद देयर एंजाइटी, ठीक है। इसको मतलब ये कहा जाता है कि एंजाइटी के टाइम पे उनसे पूछा जाता है कि आप लोगों को ऐसा क्या सिचुएशन आपके सामने की जाए जिसमें आप लोग रिलैक्स हों, ऑल राइट, और उसमें फिर उनको वो जो वो बताते हैं तो उसको रिलैक्स किया जाता है, ठीक है, उसी तरीके से उसको इमेजिन करवाया जाता है।
दिस theory was developed by Stanfield and Lewis, and उसमें यह है कि they devote the first 3 sessions to ascertain the nature of the anxiety arousing stimuli. पहले 3 सेशन में जस्ट ये फाइंड आउट किया जाता है कि वो कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से यू आर फीलिंग एंजाइटी. तो अब इसमें इन्होंने एग्जांपल ऐसे दी कि दे डिस्क्राइब अ यंग वुमन हु कुड नॉट स्विम and he was terrified by water, right? So particularly of sinking under the water basically. So although she knew it was irrational, she was so terrified of water that she wore a life preserver when she took a bath. So she was instructed by the therapist to imagine in minute detail taking a bath without a life preserver in a bottomless tub with and slipping under the water. Initially the patient showed intense anxiety, लेकिन then with the passage of time वो चूंकि होमवर्क कर रही हो रही थी कि उसने इमेजिन ये करना है कि वो ड्राउन नहीं हो रही, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ निकलता चला गया. नंबर ऑफ थेरेपिस्ट जो हैं वो कंसिडर करते हैं इम्प्लोसिव थेरेपी को. बेहतर है, वो समझते हैं इम्प्लोसिव थेरेपी दैन डीसेंसिटाइजेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोटिक फोबियाज. जो फोबियाज होते हैं डिफरेंट किस्म के, इनको ट्रीट करने के लिए इम्प्लोसिव थेरेपी इज वेरी गुड, राइट. नेक्स्ट हमारे पास आ रही है एवर्जन थेरेपी. ये अप्रोच जो है इट इन्वॉल्व्स द मॉडिफिकेशन ऑफ द अनडिजायरेबल बिहेवियर बाय द ओल्ड फैशन मेथड ऑफ पनिशमेंट. Most commonly used aversive stimulus is electric shock. Although drugs may also be used, but it is easy to control, and the timings and intensity of the shock can also be controlled precisely. वो shock दे दे के तो वो उसको जो भी बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर लेते हैं. ऑल राइट. और इस बिहेवियर को अडॉप्ट किया था, इस ट्रीटमेंट को कैंटोरोविच ने इन 1930. और इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो शॉक की एलिमेंट है उसको चूंकि आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है. सो द बिहेवियर थेरेपिस्ट हु चोज दिस एवर्सिव प्रोसीजर दे seldom use them alone. Instead, more positive techniques are instituted to teach new behavior to replace that eliminated. Behavior therapists believe that aversion therapy be used as a last resort. ठीक है, आखिर में जब और किसी भी तरीके से नहीं, क्योंकि देखिए भी इलेक्ट्रिक शॉक आप शुरू से पेशेंट को देना शुरू कर दें तो आप सोचे कि पेशेंट बेचारा कहाँ जाए. सो इसको सबसे आखिरी उन्होंने रखा है रिजॉर्ट. उससे पहले दे ट्राई टू कंट्रोल इट थ्रू अदर डिफरेंट बिहेवियर थेरेपीज, ठीक है. लेकिन जब बिहेवियर एटीट्यूड जो है वो मैल अडेप्टेड बिहेवियर वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता था एंड इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अदर मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, ओनली एट दिस टाइम एवर्जन थेरेपी को यूज किया जाता था. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.